Be honest with yourself. How many times have you said कल से पक्का पढ़ूंगा and then YouTube, Instagram, sleep, overthinking and repeat. Actually, you are not lazy. You are stuck in this loop and today we break it. So let's start. Why students waste their time? Let's clear one myth first. That you don't waste time because you are careless. You waste time because overwhelmed फील करते हो. आपको डर लगता है फेलियर से. आपको पता ही नहीं है कहाँ से स्टार्ट करना है. तो आपका दिमाग जो है वो एक अच्छा तरीका ढूंढता है. वो है डिस्ट्रैक्शन. सो फोन आर नॉट द प्रॉब्लम. कंफ्यूजन इज. Part 2. The biggest lie we tell ourselves. I'll start when I feel motivated. Listen carefully. Motivation comes after action, not before it. Waiting for motivation is the fastest way to wasting your time. Part 3. Time is not problem. Energy is. You don't lack time. You lack energy and clarity. आप खुद से पूछिए कि आपको पता है कि आज आपको एग्जैक्टली पढ़ना क्या है. अगर आपका प्लान है पूरा सिलेबस आज ही ख़त्म करने का तो आपका दिमाग पहले से ही शट डाउन हो जाएगा. सो क्लैरिटी बिट्स लॉन्ग आवर्स. पार्ट 4. इसमें हम देखेंगे 3 रूल जिससे आप अपना वेस्टिंग टाइम को कम कर सकते हो या फिर स्टॉप कर सकते हो. रूल 1. श्रिंक द टास्क. यानी कि स्मॉल टास्क लेस रेजिस्टेंस. आपको ऐसा नहीं करना है कि मैं 1 घंटे में एक चैप्टर कंप्लीट कर दूंगा. नहीं भी हो सकता है. आपको ऐसा करना है कि मैं 25 मिनट में एक टॉपिक कवर कर दूंगा. ऐसे स्मॉल टास्क से आप टाइम को बचा सकते हो. रूल 2. कंट्रोल योर एनवायरनमेंट नॉट विल पावर. अगर आपका फ़ोन ही आपके बाजू में होगा तो ऑब्वियसली आप पढ़ाई नहीं कर सकते. आपको डिस्ट्रैक्शन होनी ही है. रूल 3. स्टार्ट अर्ली स्टार्ट नाउ. मतलब messy action is better than perfect planning. Your notes don't need to be perfect and your understanding doesn't need to be 100%. जितना पता है completely होना चाहिए. So this rule will help you to stop wasting time. Part 5. Social media is stealing more than time. It steals your attention, your peace, your confidence. Remember, you are comparing your behind the scene with someone else's story and highlights. So limit scrolling before it limit your future. Part 6. आपकी आइज 10 सेकंड के लिए बंद करो और इमेजिन करो वो रिजल्ट का दिन, वो एग्ज़ाम का दिन. एंड 2 वर्जन ऑफ योर सेल्फ यू कैन सी. वन वो kept delaying and the other वो still trying even he or she is imperfect. So which one do you respect most? Part 7. Discipline is self-respect. You don't need to study 12 hours a day. You need to be consistent and honest efforts. Final message for you guys that stop waiting for right time and stop waiting feel good. Start from where you are. Use what you have and do what you can today. Cause time never asks you if you are ready. It will just pass. And one day you will either say, I proud on myself I didn't quite, or I wish I try earlier. So choose wisely. Okay guys, so like, share, subscribe, and if this video help you, then share it who really need this right now. Okay, bye.